नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस। एक छोटा सा टॉपिक है बट कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। सो टॉपिक का जो नाम है वो है बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस। सबसे पहले तो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। सो एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं। सो एनपीएन ट्रांजिस्टर ये रहा हमारा, दिस इज एनपीएन। सो इट इज एन, इट इज पी एंड इट इज एन। दिस इज इमीटर, this is collector, and this is your base. Now since emitter base junction is forward biased, clear है? So it decreases the cut-in voltage, that is V naught or the barrier potential, clear है? which minimizes or decreases the depletion with at emitter site, ठीक है। Now since emitter base junction is forward biased, so it reduces the cut-in voltage or the barrier potential voltage, which minimizes or reduces the depletion width at the emitter site. So if you see at the emitter site, the depletion width is this is your depletion with red band, okay. Now since this collector base junction is reverse biased, okay, ठीक है। then it increases the cut-in voltage, which increases the depletion with at collector side, ठीक है यहाँ तक। so your depletion width is now moving towards what side? The collector side. so this is your width, the depletion width, clear? now the p region is in this region. now the p region is this region, clear? now अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं, डेफिनेशन समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है? सो दिस इज द स्मॉल p region, क्लियर है? वी हैव शोन द डिप्लीशन रीजन एट द emitter साइड, डिप्लीशन रीजन एट द कलेक्टर साइड। नाउ अगर मैं डेफिनेशन, ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई, अगर मैं डेफिनेशन की यहां बात करता हूं, डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी? दिस इज कॉल्ड RBP डैश, द बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस, क्लियर है? Now the resistance offered by small region of base when BJT is in active mode, is called base spreading resistance, so the resistance offered by this small section of the base region is called this base spreading resistance. So the resistance offered by the small region of base when BJT is in active mode is called base spreading resistance, ठीक है? This is the first point. Now second point, this resistance is high at high frequency and low
at low frequency. So this resistance has importance at the high frequency. Clear? Next thing, its value is 100 ohm to 150 ohm, and the maximum value is 1000 ohm. क्लियर है? ठीक है यहां तक. फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, क्या हो सकता है यहां पर. नाउ its value depends on or it is doping level and VCB, the collector base voltage. कैसे देखते हैं? collector base voltage पे डिपेंड करता है. now as collector base voltage increases, that is as reverse bias voltage increases, depletion with is extending toward what side? Toward collector side. So base spreading resistance increases. कैसे जरा समझिएगा ना. अगर हम बात करते हैं, suppose we are increasing the collector base voltage, the reverse bias voltage, then depletion with is extending toward the collector side more and less toward the base side. Then what happened? This depletion width goes to this side. Then this region will increases, and the resistance offered in this region is called base spreading resistance, so it will increases. Clear है यहाँ तक? I hope so. ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी. So base spreading resistance कौन सा resistance है? The resistance offered by the base, the resistance offered by the small section of base during active region of transistor is called base spreading resistance. It is more significant when it is operating at high frequency, and this is ignored at the low frequency. Its value ranges 100 ohm to 150 ohm, and its maximum value is 1000 ohm. Its value depend upon the doping level and the reverse bias collector base voltage. Clear है यहाँ तक? I hope so. बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा. Now एक न्यूमेरिकल आया हुआ है इस टॉपिक पर, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल. Now हमारे सामने एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं. इन ए बीजेटी द बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस इज द ऑर्डर ऑफ. पहला ऑप्शन है 1 ओम, दूसरा ऑप्शन है 10 ओम, थर्ड ऑप्शन है 100 ओम एंड लास्ट ऑप्शन है 1000 ओम. नाउ क्वेश्चन पूछा है कि इसकी रेंज क्या है. अगर हम बात करते हैं रेंज की, इसकी जो रेंज है बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस दैट इज 100 ओम टू 150 ओम, एंड द मैक्सिमम वैल्यू is how much? 1000 ohm. Now what they are asking? Order. किस order का होता है? So in general it is called range. So the correct answer is 100 ohm. So C option is correct. Now maximum value अगर पूछा जाता तो we will choose D option. Clear है यहाँ तक? ठीक है. तो ये आपका जो टॉपिक है बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस खत्म हो गया है. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं.